So by today we are going to start with how to build up a customized CRM, Salesforce-based CRM application. देखिए, first of all, whenever we build up a CRM, probably in the last lecture or before that, we have gone through the agile methodology of software development. और हाँ, एक डिस्कशन में हमने आपको बताया कि the first thing is to understand the requirement, and based on the requirement, what actually client want us to be built, what the client want us to be, the kind of functionality that he wanted to be incorporated. तो हमें क्या है, सबसे पहले we just need to understand what exactly is the requirement. सबसे पहली बात. Now once you understand the requirement, एक बार आपको ये समझ में आ जाए कि that we are into this particular functionality, we are about to build this particular functionality. Then the second thing is modularization. Modularization का मतलब होता है कि what could be the different set of functionalities, different set of modules जो इसमें रहने चाहिए. In this way, actually, this is the way we build up the application. Then we create a design, and then we start the builds. These are some phases of the project development. Like requirement, you have to discovery is the first phase, and then design is the second phase, sometimes also called as modularizations. Third phase, when the designs has been approved, then we start up the build. So build मतलब होता है कि actually application create करना. So when you join in the company, probably initially you will not be get involved in this phases of discovery and the phases of design. थोड़ा सा senior होने के बाद में आप इसमें आओ. But at least once you get into the industry, you will start in the build phases. आप जो काम करोगे वो कौन सी phase पे करोगे? You will work on the build phases. So I'm telling you this why? Because sometimes in the interview they initiate this discussion on which phases of the project development you have worked. Because you have mentioned that you were using agile methodology of software development. Then you should be aware of that. On which particular phase that you have worked. You need to say that I was working on the build phase only so far, and I was not involved in the design phase. I was not involved in the discovery phase. But yeah, at least I was on the build phase. My कौन सी phase पर था? Build phase. So build phase is actually that phase where we literally create the applications, and we actually create all the features that we wanted to be get inside the application, that we wanted it to be present inside the application. To build is that particular phase. Now you as a system administrator, as a Salesforce developer, you are initially going to start your career on this particular phase. So always remember this, always remember this. When they ask this in the interview, on which particular phase of software development you were being deployed. आप किस पे काम कर रहे हैं? You always need to say that we were working on the build phases. This is the phase where we are actually starting. This is the phase from where I am taking you to start on this CRM application. So let's build one application. Now, what is an application? Application is a set of functionalities, right? Application is something that fulfills a requirement. Application is the finest product. Application is that thing which is being, which is being created by a Salesforce developer and administrator. Application is something a team effort. When you actually come to, the project part in the real time, we are not, we are not responsible to build the whole complete application, because application is a very big entity, But we are going to work on the sum of the part that is called as module. This something is my module. I mean, out of every functionality is what is there inside this application. I have designed this module. This is what the answer is. But अभी कैसा है कि अभी because you are अभी आपको ही बनाना है सारा. So right now we are going to start with one of the project. ठीक, एक project हम start करते हैं, एक CRM based project पर. और then we are going to उसमें मैं 3 से 4 से 5 objects create करवाऊंगा, ज़्यादा नहीं. And then we will understand out of all these applications, out of all these objects that we are going to create from the application, we will understand the every functionalities related to Salesforce admin
और एडमिन कवर करने के बाद में आफ्टर एडमिन वी आर विद द सेम एप्लीकेशन विद द सेम ऑब्जेक्ट्स वी आर गोइंग टू कवर द थिंग्स रिलेटेड टू डेवलप. ठीक है. So this is what we are going to start. Now see, application itself have two categories. Salesforce, Salesforce provide you two different sets of applications: standard applications and the custom applications. Now, what are the standard application? First, let's cover this category. तो स्टैंडर्ड एप्लीकेशन की वो एप्लीकेशंस होते हैं that are actually there inside the Salesforce. No. When I created this org, when you created the org, probably you guys have created, because yesterday was that Zosna, I think. I don't know whether she is here or not. So if you haven't created an org, you could not practice on this, because this we are dealing with a cloud technology, and there's nothing I could say that install this software, install that software. There's nothing. You just at all required to create a developer org. So whenever we created our developer org and we come up with this on, we come up with this environment, I could see that there are few of the applications that are already there inside the app launcher. See, Sales Cloud, that means sales application is already there. Service application is already there. Marketing. If you at all wanted to see how many applications are there inside this, just go with app launcher. Click on the app launcher. See, it will eventually going to list out, how many applications right now are there inside your org. And these applications, see, because we have not created this, any one of them, the like sales and the service, marketing, WDC, community, Salesforce Chatter is already there, content, analytics studio, means reports and the dashboard. And all tabs, of course, in one application, you could display all tabs. So these basically, all tabs are not application. Yeah, at least I could have, there are 8 standard applications in my organization. These are already there. If I ask you, did you create sales? Did you create an application called as sales? The answer is no. Did I create a service? No. Marketing? No. WDC? No. All of, but when I created this org, when we created this org, Patch 201 Developer Edition, it come up with all these standard applications. So see, standard applications have two categories. The first is standard. So these are the applications that are already there inside the org. जब आपने इसको create किया, these applications are now, they are now into the org. हमने नहीं बनाया है. But yes, they were into the org. Let's move on to any of them. Let's go to the sales. Her application में देखिए, application do have objects, and we also know how to add the objects, how to add the tabs on the application tab bar. ये तो खैर हमने सीख लिया. So these kind of applications like sales, service, marketing, community, chatters. So these kinds of applications are called as standard applications. Now we are about to build our own custom application. अब जो हम functionality, what we develop, whatever we do inside the Salesforce is called as custom application, custom thing. If you at all develop an application, if you create an application, we are going to call it a custom application. If you create an object, हम बोलेंगे कि we created a custom object. If we create a field, we will say that we created a custom field. If we create a report, तो हम बोलेंगे we created a custom report. तो custom is something जिसको user create करता है. Standard is something that is being provided to you from the Salesforce. तो हर ऐसी फंक्शनैलिटी, हर ऐसी कोई भी चीज जो आप ये कहें कि दिस वाज समथिंग व्हिच इज एक्चुअली बीइंग प्रोवाइडेड बाय द Salesforce और ये पहले से मौजूद था, so that is called a standard. Now because now we are dealing with the application, I'm calling this as a standard application. All these like sales and the service and the marketing, all these are what? These are the standard applications, right? Now we will going to create our own customized applications, whatever the requirement we are having. Okay, so we are having like let's start with the HR management because the data what I am having here, the documents that I need to share is related to the HR management. Okay, so right now these things are prepared with me. So let's start with an HR management software. Okay, a talent acquisition software. Where we can project somebody as our client, and then according to the client requirement. But let's say that there are so many freelancers, there are so many freelancers, there are so many third-party recruitments, and recruiters are there, those who perform recruitment
for any of the IT companies. I mean, on behalf of any of the IT companies. और अभी आप जब इंटरव्यू देना स्टार्ट करोगे ना, you will came to this about, you will came to know about this terminologies. Let me tell you. जैसे हम क्या होता है, एक चीज मैं बताता हूँ, अभी डिस्कशन निकला है इस चीज पे, थोड़ा सा और मैं जानकारी आपको देता हूँ। रिक्रूटमेंट दो तरह से होते हैं आईटी में। एक तो होता है डायरेक्ट कंपनी पेरोल, उसको ट्राई टू गेट द कंपनी पेरोल। कंपनी पेरोल अगर मिले तो उसको छोड़ना, बिकॉज डायरेक्ट कंपनी रिक्रूट होने का जो बेनिफिट्स है ना, वो आपके सैलरी पे, आपके सेविंग्स पे, पॉलिसीज जो भी है, मतलब अदर बेनिफिट जिसको हम सैलरी पे वेरिएबल कंपोनेंट्स बोलते हैं, वेरिएबल कंपोनेंट्स का बेनिफिट आपको बहुत इजीली मिलता है। एक दूसरी तरह का रिक्रूटमेंट होता है जिसको थर्ड पार्टी रिक्रूटमेंट, और ज्यादातर रिक्रूटमेंट यहाँ से ही होता है। मतलब एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि inside the company probably 50 developers are required. So out of that 50, 30 is already given. 30 is already given to a freelancer company. तो भाई थर्ड पार्टी को ऑलरेडी दे दिया जाता है, because company have a limited resources, company have limited resources for this particular recruitment process. When HR का टीम भी रहता है तो HR team is just not only responsible for recruitment part. HR team actually manage so many things. तो उनके पास पहले ही वर्कलोड काफी होता है। So what they usually do is that if there are 50 in the requirement, 50 मतलब 60% of the portion of the recruitment वो बाहर उठा के उसको आउटसोर्स कर देते हैं। तो वी आर नाउ अज्यूमिंग कि हम भी एक ऐसा एक क्लाइंट है जिसके लिए हम ऐसा सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हैं। ही वांटेड टू हैव एन एचआरएम सॉफ्टवेयर, एक सीआरएम सॉफ्टवेयर चाहिए उसको एचआर मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। सो ताकि जो रिक्रूटमेंट वगैरह वॉट एवर दे डू फॉर एनी सॉर्ट ऑफ कंपनी, उनके क्लाइंट्स रहते हैं आईटी कंपनी एंड दे एक्चुअली डू रिक्रूटमेंट फॉर देम दोस पीपल। ये एल1 इंटरव्यू यूजुअली ये लोग लेते हैं, और rather they arrange the interview and invite the people from that company कि आप interview लीजिए। We will actually filter out the candidate and we will arrange the interview, we'll pipeline the interview for you। तो रिक्रूटमेंट दो तरह से होता है, एक होता है मतलब 60% ऑफ द रिक्रूटमेंट थर्ड पार्टी से होता है, और 20-30% ऑफ द रिक्रूटमेंट को कंपनी पेरोल। जब आप इन फेज पे आएंगे तो कोशिश करिए कंपनी पेरोल पे जाने की। इफ यू वोंट फाइंड कंपनी पेरोल, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप थर्ड पार्टी पे ज्वाइन कर सकते हैं। थर्ड पार्टी पे ज्वाइन करने का एक फायदा ये होता है कि अगर प्रोजेक्ट नहीं भी है कंपनी के पास, आपको कंपनी फायर नहीं कर सकती। मतलब आपका जो भी रिक्रूटर होगा वो थर्ड पार्टी होगा, कंपनी जिस जिस कंपनी में उसने आपको डिप्लॉय किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको डिप्लॉय किया है इन्फोसिस पे, बट नाउ इन्फोसिस का वो प्रोजेक्ट जिस पे आप थे वो ओवर हो गया, तो ऐसा नहीं है कि आप वहां से हट जाएंगे, रादर आपका प्रोजेक्ट चेंज हो जाएगा, हो सकता है कंपनी चेंज हो जाए, इन्फोसिस पे ही दूसरा प्रोजेक्ट मिल जाए, कि आपको वहां से निकाल के कोई और जगह किसी और प्रोजेक्ट में डाला जा सकता है। सो एक बात ये रहती है कि हमारे पास में हमेशा कुछ ना कुछ रहता है, ठीक है। और अगर आप दूसरे किसी का डायरेक्ट कंपनी पेरोल पे जाते हैं तो वैसे तो यूजुअली वो भी नहीं निकालते, लेकिन हाँ बेंच पे जरूर डाला जा सकता है। आपको 2 महीना 3 महीना फिर या तो किसी और टेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए बोला जाएगा, या फिर पर सेल्सफोर्स के केस में एटलीस्ट ऐसा कुछ भी नहीं है, और सेल्सफोर्स में वैसे ही रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, तो अभी एटलीस्ट ये चीजें सेल्सफोर्स में नहीं है। तो दोनों के अपने फायदे नुकसान होते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट कंपनी पेरोल पे जाएं, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहता है समटाइम्स, बट आप अगर थर्ड पार्टी से भी रिक्रूट होते हैं तो दिक्कत नहीं है उसको, ठीक है। चलो, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डेवलप इज अ काइंड ऑफ एचआर एप्लीकेशन, एक एचआर मैनेजमेंट के लिए एक ऑटोमेटेड सीआरएम डिमांड करते हैं। And let's assume any of our client, let's Skyline probably is one of the client. Let's try to get the logos first. I mean, image for that. Okay, I'll see to that later. First of all, standards applications are two categories, ये तो हमने जान चुके हैं। Standard are something that is already there, है ना, वो पहले से था। Now we are about to build a custom application, हम एक custom application बना रहे हैं। Now what are the governor limits with this? तो governor limits क्या होती है? First of all, see, Salesforce जैसे कि आपको मैंने बताया था कि long back we have discussed about it that inside the Salesforce, ठीक है, Salesforce follows a multi-tenant architecture. सो ये एक डायग्राम था ये वाला, इसकी मदद से आपको मैंने मल्टी टेनेंसी एक्सप्लेन किया था। सो इन with this concept of multi tenancy you came to know about one fact कि ऐसा Salesforce में डेडिकेटेड सर्वर जैसा कुछ नहीं होता है। मतलब इफ योर ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट इन दिस सर्वर इन AP24, और अगर इफ दिस इज योर ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट इज द सर्वर इंस्टेंस फॉर यू इज AP24, इसका मतलब ये नहीं होता कि AP24 पे आप अकेले हो।
नो, आप AP24 पे हो, साथ में और काफी सारे लोग हैं आपके, मतलब देयर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर देयर इनसाइड दिस पर्टिकुलर सर्वर. So we could say that this server, in fact, every server, not just the AP24, every every server of Salesforce is being shared among different organizations. So that concept is called as multi-tenancy. Tenant means organization. So multi-tenants mean multiple organizations that stay inside one of the server. Now, if we ask this, okay, how many servers are there? So in a single server, 8,000 different organizations can be accommodated. Okay, so on a single server, 8,000 different organizations, up to 8,000 organization can be reside there inside one of the server. And this concept is called as multi-tenancy. So inside Salesforce, everything is on the sharing basis. See, Salesforce में हर चीज जो है ना, it's a shared resources. So that is why when the things are going to be shared among different people, तो Salesforce है ना कुछ limits लगा रहा है, कुछ restrictions लगा रहा है. On everybody, there is some sort of restriction, and that restriction is called as governor limits. That restrictions is called as governor limit. Now just take this as an example. Okay. Probably in a house there are 10 childs, and the mother cooks food for those 10 childs. So there are few restrictions that everyone can take only 3 rotis, 3 chapatis, 2 cup of rice, two balls of the rice and 2 balls of the dal and something like that. So these are what, because whatever the food she has actually prepared is going to be shared among 10 children. अभी कोई बच्चा अगर ज्यादा ले लेगा तो कोई बच्चे को भूखा रहना पड़ेगा. That is why there is a rule. वो घर में एक रूल है, एक कानून बनाया गया है, just to share the resources among different children and to make it sure कि सबको सब कुछ मिलना चाहिए, सबको सब कुछ मिलना चाहिए. कि अगर रोटियां बनी है तो सबको मिलना चाहिए, चावल बना है सबको मिलना चाहिए. For that, that rule, कि आप every child could take only 3 rotis, not more than that. You could only take 2 balls of rice. Something like this, just was an example. This rule is called as government. Now here in the Salesforce also because we see that every resource is actually on the sharing basis. Rather, अभी अब धीरे-धीरे पता चलेगा. तो एक terminology introduce हुई है. You came to know about only this fact कि सिर्फ अपना जो server space है, that is being divided into different organizations. फिर आपको धीरे-धीरे और पता चलेगा कि ये रिसोर्स भी शेयर्ड होता है, ये भी शेयर्ड होता है, ये भी शेयर्ड होता है. अपेक्स रन टाइम इंजन इज आल्सो शेयर्ड. ठीक है. उसके बाद में आपका एनालिटिक्स is also shared. Your sales service clouds are also shared. Every functionality inside the Salesforce is being shared among different users. So every user can use only his portion, and you cannot ask for the complete functionality. That is why while ये monopoly नहीं होना चाहिए, एक बच्चे ने पूरा नहीं खा लेना चाहिए. To avoid that monopoly, that only single person has everything and other people doesn't have, के पास नहीं रहे. So to avoid that kind of monopoly of this functionality, Salesforce actually, has put up some of the restriction on everything. So we are going to learn, and this restriction are called as governor limits. First of all, these restrictions, these rules are called as governor limits. So whenever we understand, whenever we start with any concept of Salesforce, we will understand and we will see what are the governor limits that are associated. तो अभी कैसे ना, we are going to start with the application development. आज आपका सबसे पहला दिन है जिसमें आज आप एक एप्लीकेशन क्रिएट करना सीख रहे हो. So before you actually start the application creation, let's first of all understand the rule. This is the rule. So what is the governor limit with the application? So if you are using a free developer account, जो कि हम अभी use कर रहे हैं, this is a free developer account. This one is a free developer account, dev add, and this is the addition what we are using, right? So inside the free developer account, we could maximum create 10 applications. मैं 2 एप्लीकेशन दिखाऊंगा, आप एक लेके हम कंटिन्यू कर रहे हैं. ठीक है. For the sake of your practice, you could create some more applications, but at max you could create 10 custom applications, not more than that, because you are working on a developer. Okay, you are working on a developer account. But when they ask you this interview में अगर पूछता है कि on which edition of Salesforce you guys have worked, that time you need to say कि हम unlimited edition पे काम करते थे, right? Now in the unlimited edition, you could create unlimited number of the applications. There is no such restriction, there's no such restrictions over there. लेकिन अभी तो फिलहाल हम जो application जो addition use कर रहे हैं, that addition is actually your developer, है ना. यहाँ पर आप you could maximum create 10 custom applications.
Now, what is the navigation to create a new application? This is the navigation. This is the way you create a new application. I have already written this. I'm going to show you the same. So if you at all wanted to create a new thing, a new application, go to setup menu, then go to build menu. Inside the create menu, you have a link called as app link. And what after clicking the app link, what you need to do is everything written here. Okay? So let's follow the process. So let's go to the setup menu first. After setup menu, you need to go to the build menu. Inside the build menu, you just required to expand the create menu. Just expand the create menu and you see there's an option called as apps. So this app actually stands for applications. This app actually stands for applications. If you wanted to create a new application, just click over. Once again, let me revise this navigation. So go to the setup menu, first of all. Then go to the build menu. Just expand the create menu, you will have this link called as application. Just click on the applications, okay? Just click on the application. So you will going to be landed on this interface. ये user interface पे आते हो आप. यहाँ पे कि सारे applications display, all of the applications, all of the applications are being displayed. Okay. Now presently in my organization, I have all these applications. These are the applications that are there inside the organizations. ये सारे मेरे organization पे अभी मौजूद हैं. ठीक है. All tabs, Analytics Studio, App Launcher, Community, Content, Marketing Platform, Sales, Salesforce Chatter, Sample Console, Service and Site Audit. Applications की दो कैटेगरी होती है. अभी आपको पता चले Custom Application and the Console Applications. ठीक है. We are going to always build, we are always going to build a custom application. What exactly is a console application? Console application क्या होता है? How to build the console application? So I'm going to share one video for you. इसके लिए मैं एक वीडियो शेयर करूंगा console application पे. I already have recorded one video. मेरे पास एक वीडियो है इसका Salesforce console app. तो ये अभी तो नहीं, बट थोड़े दिनों के बाद I'm going to share this on to your drive. एक बार आप प्रोसेस बिल्डर तक पहुंच जाओगे, प्रोसेस बिल्डर के बाद मैं इसको शेयर करता हूँ. वैसे अगर मैं शेयर करके रख भी देता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिलहाल इसको अभी देखने से कोई फायदा नहीं मिलेगा. आई एम गोइंग टू टेल यू कि आपको ये वीडियो कब देखना है. तो एक बार आप प्रोसेस बिल्डर पे जब पहुंच जाते हो, प्रोसेस बिल्डर से आगे जब मैं आपको लेके जाता हूँ, दैट टाइम आई विल टेल यू कि कंसोल ऐप का वीडियो देखो, बिकॉज अभी आप कंसोल ऐप समझने जाओगे तो आपको समझेगा. ठीक है. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कस्टम ऐप. एवरी ऐप व्हाट वी आर गोइंग टू डेवलप इज अ कस्टम ऐप. मैंने ये बताया कि एप्लीकेशन दो तरह के होते हैं, स्टैंडर्ड एंड कस्टम. ठीक है. तो बेस्ड ऑन द फंक्शनैलिटीज, ये बेस्ड ऑन द फंक्शनैलिटीज कंसोल और कस्टम होते हैं, वो अलग पार्ट है. कंसोल को भूल ही जाओ, थोड़ी देर के लिए आप कंसोल पे ध्यान ही मत दो. अभी आपसे अगर कोई पूछे कि हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन, यू नीड टू से देयर आर टू टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन, स्टैंडर्ड एंड द कस्टम. ठीक है. कंसोल क्या है इसमें बाद में आएंगे. अभी फिलहाल इस कैटेगरी को थोड़े दिन के लिए इग्नोर करके चलो. तो देयर आर ओनली टू काइंड्स ऑफ एप्लीकेशन, स्टैंडर्ड, कस्टम. ठीक है. अभी इस वक्त मेरे ऑर्ग में, इन दिस पर्टिकुलर ऑर्ग, these many are the applications that are present inside the org. Now I just wanted to ask one question with you कि ये जितने भी applications हैं इस वक्त, you can unmute yourself, you have the command. मैंने आज command remove नहीं किया. You tell me all these applications, whether these applications are standard applications or they are the custom applications. Yes, anyone, any of them. Standard. Standard application. Now how could you say that? Yes, Komal and Sohil. Why you are saying that these applications are standard? Because there are two types of applications: standard application and custom application. Under standard applications, there is a analytic app, community, content marketing. Okay. That's why it's a standard application. Exactly. You already have seen this. You already have seen this inside this. But on this particular page, it is one more thing. If you probably have identified, there is a column called as custom. See, there's a column called as custom, right? This is one of the column. And custom column is having some of the checkboxes. तो कैसा है कि every that application, every that application which is a custom application, अगर कोई ऐसा application है जो custom है, for example, if this sample console, ऐसा मान के चलो कि if it is a custom application, तो उसके लिए जो custom application का जो checkbox होता है वो click होता है इस तरह से.
अभी तो मैं देख सकता हूँ, for now I could see that this is unchecked. For all tab it is unchecked, analytics unchecked, app launcher unchecked, community it's unchecked, content unchecked. So wherever it is unchecked, that means this is a standard application. Because if at all it is a custom application, अगर ये custom application होता, जैसे कि हम अभी बनाने वाले हैं, we are about to create a new custom application with this button, new button. I require to press this new button. वहां से मेरी journey start होती है towards creating a custom application. When the application is being created, जब application बन के तैयार हो जाएगा, the application is being created, जो बन के तैयार हो जाएगा, तो उसके नाम, पहली बात उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा, और जो भी एप्लीकेशन में बनाऊंगा और दैट इज उसका नाम यहाँ पे लिस्ट में ऐड हो जाएगा. एंड मोर ओवर उसके लिए जो कस्टम कॉलम पे जो चेक बॉक्स है वो ऐसा चेक रहेगा. तो विद दिस यू कुड अंडरस्टैंड, कि व्हाट आर द एप्लीकेशन दैट आर इन. तो क्या होता है, देखो एक चीज समझो कि whenever अगर हम मिडल पे ज्वाइन करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वी आर whenever they take us or they deploy us to a project, but ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट के आप एकदम स्टार्टिंग से ही जाओ. So sometimes you even join sometimes you join even in the middle of entire development process. तो आपको पता करना है कि कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं, किस पे काम चल रहा है. तो यू कुड कम अप विद दिस नेविगेशन. आप सेटअप पे जाइए, बिल्ड पे जाओ, क्रिएट पे जाओ, एप्स पे जाओ, एंड यू विल गेट द लिस्ट ऑफ एवरी एप्लीकेशंस जो है. उसमें से फिर आपका कौन सा है, आपको किस पे स्टार्ट करना है, वो आप यहाँ से. बिकॉज सी ऐसा जरूरी नहीं कि सारे एप्लीकेशन यहाँ पर लॉन्च हो. जितने भी एप्लीकेशन, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, आप बोलोगे सर अगर कोई भी एप्लीकेशन हम क्रिएट भी करते हैं वो तो यहाँ पे तो दिख ही जाएगा. ऐसा जरूरी नहीं है. समटाइम्स इवन वी कुड हाइड देम. तो अगर यहाँ पे हिडन कर रखा है, तो आपको जैसे मैंने कहा कि एक XYZ नाम का एप्लीकेशन है, हम आपको उसमें डिप्लॉय करते हैं और आपको हमने क्रेडेंशियल्स दे दिया, आपने लॉग इन किया, आप ऑर्ग पे आ गए. अब आप XYZ को यहाँ ढूंढ रहे हो, आपको मिल ही नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे हाइड किया हुआ है. यहाँ पे लिस्ट में कौन कौन रहेगा, दैट इज थिंग वी कुड डिसाइड. तो फिर आपको कैसे पता चलेगा. दिस इज द नेविगेशन. दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस नेविगेशन. ये एप्स देखने हैं तो यहाँ से देख सकते हो, ऑफ कोर्स यू कुड सी दैट, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पे सिर्फ नाम डिस्प्ले होता है, और वो कस्टम है या वो स्टैंडर्ड है या फिर वो कंसोल है, वो नहीं पता चलता. तो उसका नेविगेशन क्या, व्हाट इज दैट नेविगेशन वेयर आई कुड सी द लिस्ट ऑफ एवरी एप्लीकेशन. ये है वो नेविगेशन. यहाँ पे आपको पहली बात सारे एप्लीकेशन डिस्प्ले होते हैं, उसमें से कौन से कंसोल है, कौन से स्टैंडर्ड है और कौन से कस्टम है. एक्चुअली स्टैंडर्ड कॉलम नहीं है, बट वो इजीली समझ में आता है भाई. जिसके लिए कस्टम अनचेक्ड है वो स्टैंडर्ड है, जिसके लिए कस्टम चेक्ड है वो कस्टम है. ठीक है. तो दिस इज द नेविगेशन टू फाइंड आउट एवरी एप्लीकेशन व्हाट इज बीइंग देयर इनसाइड द ऑल. फिलहाल ये जितने भी दे ऑल आर द स्टैंडर्ड एप्लीकेशंस. एक तो ये कि हमने कुछ बनाया नहीं, इस वजह से भी ये स्टैंडर्ड है. मोreover I could clear cut see over here custom जो है, custom check box जो है, that is unchecked for all these applications. ठीक है. Okay, so let's create one of the application. एक नया application बनाते हैं. First of all, just for the sake of practice, मैं एक dummy बनाता हूँ, उसके बाद actual बनाता हूँ. So I'm creating one application. So to create the application, just click this new button. Click the new button. What type of app? Custom app. Of course, custom. Console अभी नहीं. Console process builder तक पहुंच जाओ, उसके बाद में मैं खुद ही बताऊंगा कि आप console app देख लो. ठीक है. तो custom app. The default is also custom app. Console पे नहीं. Default selection is custom app. Custom app से select करो and next जाओ. Give the name. The name called as Merck Incorporation. ठीक है. Merck Incorporation. I'm creating one of the application. जैसे आप यहाँ पर से tab press करते ही अपने आप create हो जाता है. You wanted to give some description to give like Merck Corporation is pharma based. You could give anything, you could, I just wanted to introduce this. That is why I wrote this. Okay. So this is the description, a little bit description about the applications. Uske baad next, click the next. Here, if you have the image, then insert the image. Otherwise, I'm telling you how to insert the image. Usko skip karte hain. See, for every application have its own image. We call this to be the logo. Because these all are the Salesforce application, इनका logo यही रहेगा, है ना. आप चाहे Sales Cloud से Service Cloud पे जाओ, आप सर्विस से मार्केटिंग पे जाओ, because these all belongs to Salesforce, ये रहेगा logo. ठीक है. This is the logo for these applications. But अभी जो हम बना रहे हैं,
वी आर बिल्डिंग समथिंग कॉल्ड एज मर्क इनकॉर्पोरेशन। तो मर्क इनकॉर्पोरेशन का लोगो है आपके पास तो दीजिए, अभी नहीं है तो फिर डिफॉल्ट, पहले डिफॉल्ट कैसे लेना वो बताता हूँ, और बाद में फिर लोगो कैसे असाइन करना, वो 2 एग्जाम्पल इसीलिए लेने वाला हूँ मैं यहाँ पे। तो राइट नाउ आई कंसीडर दैट आई प्रेजेंटली डोंट, and the client has not given me his logo, about to share, but yeah, I mean right now he is not actually has shared, so I don't have any image with me right now। कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी नहीं है तो बाद में भी ऐड कर सकते हो आप, ठीक है। तो जस्ट प्रेस द नेक्स्ट बटन, आगे बढ़ जाइए। नाउ इनसाइड योर, अभी जो आप क्रिएट कर रहे हो ना एप्लीकेशन, जो आप क्रिएट कर रहे हो, तो एप्लीकेशन में होम पेज, होम टैब तो सब में रहेगा डिफॉल्ट। अपार्ट फ्रॉम द होम, व्हाट यू वांटेड, व्हाट अदर फंक्शनैलिटीज यू वांटेड टू हैव। अब यहाँ से एक चीज मैं आपको बताना चाहूँ, देखिए सेल्सफोर्स सीआरएम इतना फ्लेक्सिबल है कि जिसमें हम कहते हैं कि एप्लीकेशन डेवलपमेंट का जो पार्ट है वो बहुत ही रैपिड होता है। इवन ये हमने डिस्कशन भी लिया था इस बारे में, देयर वाज अ डायग्राम, to try to get that डायग्राम था जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि हाउ एक्चुअली द सेल्सफोर्स डेवलपमेंट गोस ऑन, ये डायग्राम था हमारा। और फिर मैंने आपको इस चीज के बारे में जानकारी दिया था कि अगर आप अपार्ट फ्रॉम द सेल्सफोर्स अगर आप कहीं भी जाते हो तो देयर आर 2 to 3 थिंग्स दैट आर इन्वॉल्व। लेकिन सेल्सफोर्स में कैसा होता है, देयर इज ओनली वन टीम ऑफ द डेवलपर एंड एडमिनिस्ट्रेटर, वी ओनली बिल्ड अ फ्रंट एंड पार्ट, है ना, हम सिर्फ फ्रंट एंड पार्ट बनाते हैं। अब फ्रंट एंड को सपोर्ट करने के लिए जो बैक एंड पे डेटाबेस टेबल चाहिए, इनसाइड अ database.com दिस टेबल इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड। और फिर वो क्लास, वो बिजनेस लॉजिक क्लास व्हिच इज एक्चुअली रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश द कम्युनिकेशन बिटवीन द फ्रंट एंड एंड द बैक एंड, तो वो बिजनेस लॉजिक क्लास भी अपने आप ही क्रिएट हो जाती है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ सेल्सफोर्स। अभी हम यही करने जा रहे हैं, वी आर राइट नाउ क्रिएटिंग वन ऑफ द एप्लीकेशन। तो अभी कैसे ना, यू आर ऑन टू द एप्लीकेशन डेवलपमेंट, आपके एप्लीकेशन में कौन कौन से सीआरएम के फीचर्स होने चाहिए। तो सेल्सफोर्स सीआरएम के बिल्ट इन जितने भी फीचर्स है, देखो वो सारे अवेलेबल है, सारे के सारे सारे अवेलेबल। तो आपको सिर्फ उसे ऐड करना आना चाहिए, और इसके अलावा जो नहीं है वो हम क्रिएट करें। सो ये एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से एप्लीकेशन डेवलपमेंट बहुत रैपिड है सेल्सफोर्स में, क्योंकि सेल्सफोर्स में फ्लेक्सिबल बहुत ज्यादा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपके सेल्स क्लाउड, सर्विस क्लाउड और मार्केटिंग क्लाउड में जो ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे अकाउंट और ये सारे ऑब्जेक्ट, तो आप उसको अपने एप्लीकेशन पे नहीं ले सकते, ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने इसके पहले भी ये चीज क्लियर किया था कि कुछ ऑब्जेक्ट्स को छोड़कर सेल्स, सर्विस, मार्केटिंग पे मैक्सिमम चीजें कॉमन मिलेंगी आपको, एंड दे डू हैव सम एडिशनल फंक्शनैलिटी जो उनका अपना फ्लेवर है, उसको छोड़ के। बट अब ये तो हो गया सेल्स, सर्विस, मार्केटिंग की बात, बट अभी तो मैं खुद का एप्लीकेशन बना रहा हूँ मर्क इनकॉर्पोरेशन के नाम। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल सकता है क्लाउड से, तो मैक्सिमम थिंग, मैक्सिमम मैक्सिमम जितना भी है सब कुछ आपको मिल सकता है। और अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ चाहिए तो आप डेवलप कर सकते हो। तो इसी वजह से आपका एप्लीकेशन डेवलपमेंट एक तो बहुत फास्ट है, दूसरा बहुत ही फ्लेक्सिबल। तो एक थोड़ा बहुत नेविगेशन अगर किसी को नॉन टेक्निकल पर्सन को भी आता है ना, इवन ही कुड बिल्ड एप्लीकेशन। आप तो फिर भी टेक्निकलिटीज जानते हैं या सीख रहे हो। Even a non-tech, this is why, this is why the people from any other background are more successful in the Salesforce। अभी तक आपने स्टार्ट किया और आने वाले 30-40 लेक्चर तक you are not writing a single line of code। That is the reason why Salesforce, actually Salesforce में इतने सारे दूसरी ब्रांचेस के लोग क्यों इतने सक्सेसफुल हुए। मेरे पास देखो ना, मैं शेयर करता रहता हूँ आप लोगों से, पता नहीं मैंने शेयर किया या नहीं किया, बट मेरे पास जो सिलेक्शंस हुआ है अभी रिसेंट सिलेक्शंस, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का है, कोई इलेक्ट्रिकल का है, somebody is even not from the engineering background, ऐसा भी है। तो दिस इज द रीजन, आप धीरे धीरे समझ जाओगे कि ये पूरा नॉन टेक्निकल पार्ट है, कहीं पर भी इसमें ना कोडिंग इन्वॉल्व नहीं है। कोडिंग का डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट में जब जाएंगे तब उसकी बात करें। So right now I'm about to build one of the application, and I could add as many things as I wanted from the Salesforce CRM। I want accounts to be get added, just select account, add it, ठीक है। You want the campaign, just select the campaigns, add it, ठीक है। अब एक एक ऐड करने के बजाय I'll do one thing, मैं एक साथ सिलेक्ट करता हूँ और ऐड कर देता हूँ। चैटर्स, I want to contacts, subscription, contracts, customers, images, whatever you want, just select it, select it, add them। So I just wanted to, I just wanted to have these many of the tabs inside the application। अब उसका मतलब ये नहीं होता कि फ्यूचर में मैं इसके ऊपर और कुछ नहीं कर सकता, नो।
आपके पास ये फैसिलिटी हमेशा अवेलेबल है, भले आप आज इतने ऐड कर रहे हो, अभी यू आर स्टार्टिंग विद दिस, कल क्लाइंट के हिसाब से आप इसमें और टैब ऐड कर सकते हो और कुछ चीजें यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो। अभी जैसे यहाँ पर एक टैब बार असेंबल हुआ है ना, ऐसे ही फॉर द सेल्स क्लाउड ये असेंबल हुआ है। अभी जो आप एप्लीकेशन बना रहे हो ना, तो सेल्स एप्लीकेशन है, तो अभी आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो, तो आपके एप्लीकेशन का ये टैब बार डिजाइन कर रहे हैं आप। दिस इज द टैब बार व्हाट यू आर डिजाइनिंग फॉर योर एप्लीकेशन। आप उसमें आप कैंपेन को ऊपर रखना चाहते हैं, ऊपर रखिए। लीड प्रोबेबली आई हैवंट एडेड, ऐड द लीड आल्सो, लीड्स, ठीक है। कैंपेन के बाद में मुझे लीड्स देखने की आदत है, ओके। लीड्स के बाद में अकाउंट देखता हूँ, अकाउंट्स के बाद में आई कुड सी द कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। अपॉर्चुनिटी आई हैवंट एडेड, लेट्स ऐड द अपॉर्चुनिटी आल्सो। अपॉर्चुनिटी, उसके बाद में आई वांटेड टू सी द अपॉर्चुनिटीज, फिर केसेस चाहिए मुझे, चैटर मुझे सबसे आखिरी में चाहिए, है ना। एंड देन आफ्टर द केसेस आई वांट दिस सॉल्यूशंस, उसके बाद कस्टमर्स ऐसा। यू कुड ऐड, यू नो, आप लेटर भी कर सकते हो, आप बाद में भी कर सकते हो। नाउ होम पेज इज द होम टैब इज द डिफॉल्ट टैब। तो आप डिफॉल्ट लैंडिंग टैब क्या चाहते हैं, होम चाहते हो या फिर आप इनमें से कोई और चाहते हो? तो जनरली इट्स ऑलवेज होम, दैट इज व्हाई आई एम गोइंग विद द डिफॉल्ट सिलेक्शन, है ना। वैसे आप भी समझते हो कि डिफॉल्ट लैंडिंग पेज हमेशा होम पेज ही होता है, तो डिफॉल्ट लैंडिंग टैब भी हमेशा होम ही होना चाहिए। सो लेट्स बस छोड़ दो उसको, इतना कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि उसको चेंज करके कुछ और बनाए। सो लेट इट बी विद द डिफॉल्ट लैंडिंग टैब इज होम, होम ही रहने दो। लेट्स प्रेस द नेक्स्ट बटन। तो अब ये होते हैं, यहाँ पर आपको क्या करना है, ये दीज आर डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स। ये यूजर्स क्या होता है, ये भी मैं पढ़ाने वाला हूँ, डोंट वरी, ना। सिल्वर यूजर, पार्टनर यूजर, आइडेंटिटी यूजर। आई जस्ट वांटेड कि ये जो मैं एप्लीकेशन बनाने वाला हूँ, ये जो मैं एप्लीकेशन बनाने वाला हूँ, ये किसको किसको दिखना चाहिए। तो फिलहाल उसके ऊपर मैं चर्चा नहीं करता, मैं बस क्या ये सिलेक्शन करता हूँ ये, एंड आई एम मेकिंग दिस एप्लीकेशन विजिबल फॉर एवरी यूजर, ठीक है। आगे चल के हम सीखने वाले हैं व्हेन वी विल स्टार्ट विद द सिक्योरिटी एंड व्हेन देन हम अलग अलग यूजर्स क्रिएट करें, तो कौन से यूजर को कौन सा एप्लीकेशन दिखना चाहिए, उस पर हम आगे में चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी तो फिलहाल हम एक जनरलाइज सिलेक्शंस के तहत आगे बढ़ते चलेंगे। एवरी टाइम आई क्लिक दिस चेक बॉक्स, चाहे मैं एक एप्लीकेशन बनाऊं, चाहे मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊं, चाहे मैं एक फील्ड बनाऊं, whenever I create anything I'll make it visible for everybody, ठीक है। अभी तो मैं यही करूंगा और अभी आपको भी यही करना है। We will make it, what are the things what we are constructing, we will make it visible for everyone inside the organization, for every user we make it visible. आगे चल के हम थोड़े सिलेक्टिव होंगे, बट राइट नाउ वी आर जनरलाइज्ड, ओके। आगे चल के फिर हम थोड़े सिलेक्टिव हो जाएंगे, वी विल मेक इट स्पेशलाइज्ड एंड मेक इट विजिबल फॉर समबडी एंड वी विल मेक इट हिडन फ्रॉम समबडी। तो वो आगे काम करते हैं उसके ऊपर। अभी तो फिलहाल आपको ये इसको विजिबल करना है, मेक इट विजिबल फॉर एवरीवन, जस्ट स्क्रॉल इट डाउन, सेव इट, एंड वंस यू सेव इट, आपका नया एप्लीकेशन बन के तैयार है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव वन एप्लीकेशन, देखो यहाँ पे एक मर्क इनकॉर्पोरेशन ऐड हो गया है। फर्स्ट थिंग, the first impression is the Merck Incorporation. Merck Incorporation is a pharma-based manufacturing unit. The description what I have written over there, the description यहाँ पर। For the Merck Incorporation, what I wanted you to identify, दो से तीन चीजें मैं चाहता हूँ identify करना। सबसे पहला, in the custom column, the checkbox is checked. Now I could have a clear understanding over here that these are standard applications. These are also standard applications, but your Merck is a custom application. Why? Because for the custom application, this checkbox is checked, right? एक तो ये देखा मैंने. The second thing what I wanted you to observe is the delete. See, any standard application you cannot delete. You can edit it up to a certain level. You can edit the standard applications up to a certain level. These are again not fully customizable. You can go and edit up to a certain level. उसके बाद आप आगे नहीं जा सकते। तो फॉर ऑल ऑफ द स्टैंडर्ड एप्लीकेशन यू कुड एडिट देम, बट यू कुडंट डिलीट देम, आप उसको डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो स्टैंडर्ड एप्लीकेशन एंड दिस वी हैव रिटन, डोंट वरी, आई ऑलरेडी हैव रिटन दिस इन द थ्योरी। बस ये कि मैं थ्योरी पूरी तरह से पढ़ता नहीं और आपको बोलता हूँ कि आपको पढ़ना है। सो वी कैन एडिट, वी कैन यूज, आप उसको यूज कर सकते हो, आप एडिट कर सकते हो अप टू अ सर्टेन लेवल टू स्टैंडर्ड एप्लीकेशन, बट वी कैन नॉट डिलीट और रिमूव। आप उसको डिलीट नहीं कर सकते, बिकॉज इफ यू आर एबल टू डू दैट, वैसे यू आर नॉट एबल टू डू दैट, लेकिन अगर आप कर पाते तो यू विल गोइंग टू अफेक्ट द सीआरएम फंक्शनैलिटीज। मानो गलती से आपने सेल्स डिलीट कर दिया, सेल्स एप्लीकेशन, मतलब पूरा सेल्स क्लाउड डिलीट हो गया, एंड सेल्स सर्विस मार्केटिंग इज द पिलर ऑफ दिस Salesforce CRM.
तो गलती से भी ऐसा नहीं होना चाहिए. This is the reason, Salesforce doesn't give you this authority to delete the standard applications. हाँ, custom application वो तो आपने बनाया है ना. Custom application is something what you have created. So you have full control over this. You can edit up to what you wanted to edit. यहाँ पे कोई level नहीं है कि आप इस point से आगे नहीं जा सकते. You could fully customize this, and you could, even if you don't want, you could remove this from the Salesforce CRM. आप उसको निकाल भी सकते. ठीक है. सो दिस इज द मर्क इनकॉर्पोरेशन. अब ये यहाँ पर भी दिख रहा है ना. इफ इट इज ओवर हियर तो ऐप लॉन्चर में भी आना चाहिए. यस ऑफ कोर्स. सी हियर एट द बॉटम ऑफ द लिस्ट. अब इसको ऊपर कैसे लेके आना वो भी सिखा दूंगा मैं आपको. डोंट वरी. बट हियर सम मर्क इनकॉर्पोरेशन. नाउ इफ आई एम प्रेजेंटली इनटू द सेल्स एप्लीकेशन, I wanted to go to the Merck application. Just go to this list and click on the Merck incorporation. So here now see, here you are onto the Merck incorporation. आप Merck पे आ चुके हो. This is the logo because you haven't have any logo right now. This is the logo, and this is the tab bar. This is the tab bar what we have designed over there. Okay. Can we change it? Yes, of course we have this control. The same control what we have learned. Same control is over here also. Go and customize. At any time you could customize your tab bar. You could bring the objects inside the standard objects. You could bring it. Standard tabs you could bring it, and you could remove them from the tab bar. So this application is fully customizable. This application is fully customizable. So this is how we create the applications. This is how we create the applications inside the Salesforce CRM. Inside the Salesforce CRM. How easy is this? Now you probably have understand how easy is. Now this application in the day one, it can store the things related to campaign. It can store the things related to lead. It could store accounts data. It could store the contacts data. It could store the opportunities data. It could store the cases, solution, everything, every functionality of the Salesforce CRM. You could build it inside this application from the day one itself. And how does we develop all this? Do we have written any code? Obviously no. क्या हमने कोई code लिखा? No. Do we require to have some, a deep knowledge to add the CRM functionalities? These are what? These are the CRM functionalities you added into this application. Do you require to have a deep knowledge of Salesforce CRM for that? Or just a beginning knowledge? A beginner's knowledge is sufficient. You obviously say, sir, आज तो हमारा probably, after demo, this is third to fourth जहाँ पर हम application create कर पा रहे हैं. So this is how easy Salesforce is. And this is the beauty of Salesforce. Now, one more topic I wanted to add over here. उसके बाद मैं discussion पे लाता हूँ. Because वैसे आज class late starting. So here we what have done, because we were not having the image with us. तो Salesforce image मैंने select तो कर दिया, and I built up this application with the Salesforce image. But now I'm saying that client actually has made me the logo. Client बोल रहा है कि I have this logo with me. Now you take this and just replace this image with my own logo. Just replace this with my own. वो कैसे करते हैं? तो उसके लिए कैसा होता है? There's a concept of document object and it's written. You just need to go with that way. See, now थोड़ा सा मुझे समझाने दीजिए. Every kind of image, every kind of file, whether your file is of image, your file is a picture, your file is an audio file, or it's a video file, or it's a text file, or it's a Word, or it's a Excel, it's a PDF file, it's a PowerPoint file. Every kind of file, every kind of file. If at all I wanted to, मैं उसको use करना चाहता, if at all I wanted to use it inside the Salesforce, first of all, I required to upload that into one of the object called as document. Document is a standard object. And these kind of things like images and the pictures and the audios, videos, every kind of this file is called as static resource. There's a word for this in Salesforce, it's called a static resource. So they ask you this in the interview. They ask you this in the interview also. Let me show you that. By today probably, by आज ही upload कर देता हूँ Sales आपके इसमें. Drive पे I'm going to upload this. और उसके अलावा बहुत कुछ और देने वाला हूँ मैं. How will you use the static resources inside the Salesforce? This is the question. और इसके दो तीन अलग अलग फॉर्म्स में they could ask you this. तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टैटिक रिसोर्स क्या होता है ना. अगर आपसे पूछा जा रहा है कि स्टैटिक रिसोर्सेस हाउ यू कैन यूज इनसाइड दिस इन द Salesforce, तो आपको अगर यही नहीं पता कि स्टैटिक रिसोर्स मतलब क्या, आप कैसे आंसर दोगे?
So what is a static resource? Any kind of external file, जो कि Salesforce में नहीं है लेकिन हमको लेके आनी है। जैसे कोई इमेज फाइल लानी है, कोई पिक्चर लाना है, कोई ऑडियो फाइल है, कोई वीडियो फाइल है, कोई टेक्स्ट रिकॉर्ड, जैसे कि ये एक टेक्स्ट रिकॉर्ड है, या फिर कोई वर्ड की फाइल है, कोई एक्सेल की फाइल है, कोई आपका पीडीएफ है ना, कोई आपका एक्सेल है सीएसवी फॉर्म में, या फिर कोई आपका पीडीएफ डॉक्यूमेंट है, या फिर आपकी कोई पीपीटी डॉक्यूमेंट है ना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो इस तरह का कोई भी रिसोर्सेज इज कॉल्ड एज स्टैटिक रिसोर्स। एंड व्हेनेवर एट ऑल आई वांटेड टू यूज एनी ऑफ द स्टैटिक रिसोर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे उसे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट पे अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे कि मर्क इनकॉर्पोरेशन का एप्लीकेशन हमने बना तो दिया, मर्क ने उस वक्त हमको लोगो नहीं दिया था, बट नाउ दे एक्चुअली हैव सप्लाइड अस वन ऑफ द लोगो। मर्क ने हमको एक लोगो सप्लाई किया, ये लोगो है। लेट्स टेक दिस एज एन assumption। Merck now has supplied us this logo. This is my logo and I wanted you to replace that Salesforce logo with my own logo. तो वो कैसे करें? First of all, ये जो है, this is one of the static resource. Audio file, one of the static resource. Picture file, one of the static resource. ठीक है? ऐसे जितने भी चीजें होती हैं, these all are the static resources. First of all, there is a common term for every kind of file. Every file, every external file is called as static resource. So whenever you wanted to use any kind of static resource inside the Salesforce, you actually require to first upload it inside a document object. Document object का जो object ID है वो 015. Now I wanted to go to document object. अब उसके दो तरीके, देखो यहाँ पे document object है नहीं मेरे पास। इसके दो तरीके, एक तो ये है कि मैं डायरेक्टली 015 अगर यहाँ पे चेंजेस करता हूँ, I could land it to document. एक तो ये तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट आपको चाहिए तो just add the document tab, just add the document tab onto the tab bar. Because we know at any instance of time, at any point of time, I could add few tabs, I could remove few tabs. So let me just add the documents tab. Okay, just add it and save it. तो दूसरा तो सेकंड, अगर आपको एक ही बार चाहिए तो आप नेविगेशन में चेंजेस करें, यूआरएल में चेंजेस करें। बिकॉज मैं अभी एक एप्लीकेशन और बनाने वाला हूँ, तो वहां भी इसकी मदद पड़ने वाली है, इसलिए मैंने उसको टैब बार में फिलहाल तो भी ऐड करके रख दिया, और जब मुझे इसकी जरूरत नहीं होगी तब मैं इसको यहाँ से हटा दूँ। तो अभी ये रहा आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट और ये उसका टैब है। तो whatever the document, whatever the static resources you wanted to use, जैसे अभी मैंने एप्लीकेशन बनाया है मर्क, इसका मुझे लोगो चेंज करना है, तो आई शुड हैव दैट लोगो इनसाइड द सेल्सफोर्स। वो लोगो मुझे सेल्सफोर्स में चाहिए, फिलहाल वो मेरे पीसी पे है, यू नो, यहाँ पर वो लोगो, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? If I at all wanted to use this image, I should have this image inside the Salesforce, यहाँ होनी चाहिए। तो उसको मैं कहाँ अपलोड करूँ? Salesforce में इसके लिए दो स्पेशलाइज्ड ऑब्जेक्ट है, कंटेंट और डॉक्यूमेंट। तो अभी आपको मैं डॉक्यूमेंट यूज करना सिखा रहा हूँ, कंटेंट दूसरे प्रोस्पेक्टिव से सिखाऊँ। तो आई वांटेड टू हैव एन इमेज, मुझे एक इमेज चाहिए, तो लेट्स फर्स्ट अपलोड दैट इमेज इनसाइड दिस ऑब्जेक्ट। बिकॉज़ सी, आई टेल यू वन थिंग, अगर आप यहाँ पे अपलोड नहीं करोगे, आप सोचो कि यूज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। सेटअप, बिल्ड, क्रिएट एप्स, ठीक है, ये आपने एप्लीकेशन बना रखा है वर्क इन्फॉर्मेशन, इसका मेरे को लोगो चेंज करना है। जस्ट गो एंड एडिट दिस, यहाँ से भी एडिट कर सकते हो, या इसको ओपन करो, इसको ओपन करो, आप यहाँ से भी एडिट कर सकते हो। फिलहाल ये लोगो है ना, आई वांटेड टू एडिट दिस, तो मुझे ये लोगो चेंज करना है, इंसर्ट एन इमेज। तो मैं अगर ये बटन प्रेस करता हूँ इंसर्ट एन इमेज का, तो इट इज नॉट ओपनिंग दिस अपलोड फ्रॉम माई कंप्यूटर, रादर इट्स एक्चुअली टेकिंग फ्रॉम माई पर्सनल डॉक्यूमेंट। सर्च इन द डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट फोल्डर देख रहा है, मतलब सेल्सफोर्स का डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में ढूंढ। तो अगर अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं, बिकॉज वी हैवंट अपलोडेड एनीथिंग, तो व्हेनेवर यू ट्राई टू अपलोड एनीथिंग, वो आपके पीसी से अपलोड नहीं होने वाला है, इट विल रादर गोइंग टू सर्च इट इनसाइड द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। एंड दैट इज व्हाई, यू नो, दैट इज व्हाई आपको अपलोड करना है इमेज को, तो पहले उसे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में लेके आइए। दिस इज द स्टेप नंबर। कहाँ से लाएंगे? दिस इज अ न्यू बटन, सी navigation, everything has been written, don't worry, everything has been written। okay, पहले तो आप इमेज ले लो, आपके पास इमेज है तो उसके अपलोड करो डॉक्यूमेंट। कैसे? ऐड डॉक्यूमेंट टैब, डॉक्यूमेंट टैब को ऐड करो, देन रीसेंट डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाके न्यू बटन को प्रेस करो। ये एकदम क्लियर कट है, ये एकदम क्लियर कट है, ठीक है। तो अगर आप इससे जाते हैं, आपको 100% समझ में आ जाएगा। वही मैं प्रैक्टिकली ले रहा हूँ, ऐसा एक एक पॉइंट नहीं लेता हूँ मैं, उसको बहुत समझ आता है। गिव एनी नेम फॉर अ डॉक्यूमेंट, आई एम गिविंग दिस एज अ मर्क लोगो, ठीक है, मर्क लोगो। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग देखिए, मेक इट एक्सटर्नली अवेलेबल, एक्सटर्नली अवेलेबल इमेज।
यू एक्चुअली रिक्वायर्ड टू चेक दिस चेकबॉक्स, ठीक है। अगर इसको नहीं चेक करते क्या होता है बताऊंगा। पहले गो विद द पॉजिटिव टेस्टिंग, उसके बाद नेगेटिव टेस्टिंग परफॉर्म करें। सो एवरी वन ऑफ यू, एवरी वन ऑफ यू जस्ट रिमेंबर, जस्ट डोंट फॉरगेट टू क्लिक दिस। अगर आप भूल गए तो क्या होता है बता दो। सो एक्सटर्नली अवेलेबल इमेज का चेकबॉक्स है, उसको चेक करिए। यू वांटेड टू गिव एनी डिस्क्रिप्शन, आप दीजिए, कीवर्ड देने दीजिए, अदरवाइज आई यूजुअली स्किप दिस स्टेप। नाउ सिलेक्ट द फाइल, यहाँ पे चूज फाइल का बटन है। अब ये इंटरफेस देखो, ये कौन सा इंटरफेस है, ये विंडोज का इंटरफेस, मतलब इट्स नाउ आस्किंग टू अपलोड समथिंग फ्रॉम माय कंप्यूटर। नाउ आई कुड सी दीज ऑल थिंग्स आर फ्रॉम माय कंप्यूटर, राइट। जहां पर भी आपने रखा हुआ इमेज को सिलेक्ट करो, ओपन करो, ये तो आप जानते हो उस चीज को। okay? हो गया खत्म। हाँ, देयर आर टू ऑप्शंस, आप अपने अपने कंप्यूटर से अपलोड कर सकते हो, या फिर आपके पास कोई यूआरएल है ऑनलाइन है तो वहां से यूआरएल देके कर सकते हो। जनरली लोग यही करते हैं, चूज फाइल करते हैं, सिलेक्ट द सेव, ठीक है, हो गया। ये देखिए ये इमेज लो अपलोड हो गई यहाँ, एंड इट इज एक्सटर्नली अवेलेबल, इट इज एक्सटर्नली अवेलेबल, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ जाके इंसर्ट एन इमेज करता हूँ, ठीक है, यहाँ मेरे को मर्क लोगो दिखाई दे रहा है, इसके पहले नहीं था, इसके पहले नहीं था। आई मेक दिस इमेज, फर्स्ट ऑफ ऑल आई मेक दिस इमेज एज एन अवेलेबल, उसको एक्सटर्नली अवेलेबल कर रहे हैं। अब अगर आप ये भूल जाते तो क्या होता है, सी एडिट द प्रॉपर्टीज, मैं इसको अनचेक कर लिया, ठीक है, इसको अनचेक कर लिया, ऑल्दो आई एम हैविंग दिस इमेज, लेट मी नाउ सेव दिस। अभी इमेज दिख रही है क्या आपको? नहीं, इमेज है, देयर इज अ इमेज, इमेज है, क्यों? बिकॉज उसका नाम तो नजर आ रहा है, मर्क लोगो, और उसका रिकॉर्ड आईडी भी, बिकॉज एवरीथिंग इनसाइड द सेल्सफोर्स इज हैविंग अ रिकॉर्ड आईडी। ये जो आपने अभी अपलोड किया, जस्ट अभी अपलोड किया, उसका रिकॉर्ड आईडी बन के तैयार है, 015 डॉक्यूमेंट, 015 डॉक्यूमेंट, उसके बाद 5J00, ऑल दिस इज व्हाट, 15 डिजिट का रिकॉर्ड आईडी, मतलब रिकॉर्ड तो है, आईडी है, मतलब रिकॉर्ड है। दिख क्यों नहीं रहा है? यहाँ भी नहीं दिखेगा आपको, इवन इफ यू गो ओवर हियर, यहाँ पर भी आप क्लिक करो इंसर्ट एन इमेज, हट गया यहाँ से। समझ में आई बात? इसीलिए सिर्फ अपलोड करने से नहीं होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट से अगर आगे लेके जाना है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट से आगे लेके जाना है, मेक इट एक्सटर्नली अवेलेबल, उसके बाद से अगर ये भूल गए तो ये होता है। देखो इतना डिटेल से कोई नहीं पढ़ा था, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल, इतना डिटेल से किसी के पास फुर्सत नहीं, मेरे पास बहुत टाइम है, मुझे आपको आराम से रेडी करना है, लेकिन पूरी तरह से रेडी करना है, ठीक है। तो इसीलिए ये सारी चीजें हम इतनी बारीक बारीक बातें यहाँ पर डिस्कस करते हैं, अदरवाइज इतना किसी के पास समय नहीं यार, तो 20 दिन में खत्म कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं करूँ, ठीक है। तो नाउ आई हैव मेक इट, अब इमेज भी नजर आ रही है, चलो अब इमेज आ गई आपकी, अपलोड हो चुकी है, चलो इंसर्ट द इमेज, मर्क लोगो, मर्क लोगो यहाँ पर आ गया। इसके अलावा और कुछ चाहते हो क्या? आप टैब बार में कोई चेंजेस चाहते हो क्या? आप विजिबिलिटी में कोई चेंजेस चाहते हो? ऐसा कुछ है? नहीं, आई जस्ट वांटेड टू मेक द चेंजेस ओवर हियर, मुझे सिर्फ लोगो चेंज करना था, जो कि मैंने कर दिया, ठीक है, जो कि मैंने कर दिया। डिस्क्रिप्शन में कोई चेंजेस चाहते हैं? नाम में कोई चेंजेस चाहते हैं? ठीक है, नहीं, लेट्स सेव इट। और अभी क्या फर्क पड़ता है वो आप देखो, प्रीवियसली इट वाज लाइक दिस, मर्क था, मर्क के साथ में सेल्सफोर्स का लोगो था, मर्क के साथ सेल्सफोर्स का लोगो था, और लेट मी रिफ्रेश दिस एंड सी व्हाट हैपेंड। मर्क का लोगो चेंज हो गया, नाउ यू हैव a customized logo for your application. This is the logo, right? ऐसा, this is the logo. Now, ये है आपका एप्लीकेशन क्रिएशन along with the Salesforce logo and then customizing the logo. ये एक सैंपल एप्लीकेशन था। By tomorrow I'm going to start with the कोई एक एप्लीकेशन जो है स्टार्ट करता हूँ मैं, कल एक और एप्लीकेशन क्रिएट करूंगा, आज ये सैंपल था। यू ऑल्सो गाइस डू द सेम थिंग, एक एप्लीकेशन आज आप क्रिएट करो, एंड बाय टुमारो वी विल कलेक्ट द डेटा एंड विल स्टार्ट विद द प्रोजेक्ट, ठीक है। कल एक एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे एंड देन वी विल फॉलो द सेम एप्लीकेशन फॉर एवरीथिंग, फॉर एवरी फीचर व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न एंड अंडरस्टैंड एंड अप्लाई, we are going to apply on that application. This was just a sample application, and how to create the application, how to add the images, you know, हाउ टू ऐड द इमेजेस। यहाँ पे छोटा सा एक मैं आपको एक पॉइंट मेरे से स्किप हो रहा था, बट मैं बता देता हूँ, इस वन स्मॉल पॉइंट आई वांटेड थोड़ा सा, बिकॉज अभी आपको मैंने क्योंकि इमेज अपलोड करना बता दिया है, सो लेट मी क्रिएट अ न्यू एप्लीकेशन, कस्टम एप्लीकेशन। सी एक चीज थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर, कि जो भी इमेज आप इंसर्ट करना चाहते हो, है ना, जो भी इमेज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू रिक्वायर टू इमेज अपलोड द इमेज इनसाइड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। एक और चीज का ध्यान रखिए, व्हेनेवर यू आर इमेजिंग, यू आर अपलोडिंग द इमेज,
फॉर द लोगोस, आपको लोगो के लिए जब भी कोई इमेज आप डॉक्यूमेंट में कितनी भी, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का रिस्ट्रिक्शन नहीं है ये, दिस रिस्ट्रिक्शन इज रिलेटेड टू द इमेज यू आर यूजिंग इट फॉर द लोगो। आप डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट पे कितनी भी बड़ी फाइल स्टोर कर सकते हो, मेक इट एब्सोल्युटली क्लियर, राइट। लेकिन अगर ऐसी कोई इमेज आप अपलोड कर रहे हो जिसे आप आगे चल के एज एन लोगो स्टार्ट यूज करना चाहते हो, तो देखो यहाँ पे उसका साइज है 3 KB, दैट साइज शुड बी विद इन 20 KB, मैक्सिमम इट कुड गो अप टू 20 KB। अगर कोई ऐसी इमेज, फिर से ध्यान से सुनो, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में अपलोड करने का रिस्ट्रिक्शन नहीं बता रहा हूँ मैं, किसी इमेज को लोगो जैसा यूज करने का रिस्ट्रिक्शन बता रहा हूँ। आप डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट पे कितनी भी बड़ी साइज का एक सेकेंड, मैं कॉल करता हूँ, मेरी क्लास चालू है, मैं कॉल करता हूँ, ठीक है। देखो आप क्या बोलते हैं, हाँ, तो आप डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में ना कितनी भी साइज का इमेज अपलोड कर सकते हो, बट इफ यू वांटेड टू यूज द इमेज एज अ लोगो for any application, there is one restriction, there is a governor limit। क्या? The image size could maximum up to 20 KB। अगर 20 KB के ऊपर है तो आप उस इमेज को आप बड़ी डॉक्यूमेंट में अपलोड तो कर दो, लेकिन आप उसे एज अ लोगो यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ एक छोटा सा रिस्ट्रिक्शन है जो आपको पता होना चाहिए। या फिर आप 20 KB बोलो या इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन बोलो तो 300 पिक्सल्स, 300 बाय 555 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको इमेज आज डाउनलोड करते भी हो तो उसका साइज एक बार देख लेना राइट क्लिक करके, मतलब जस्ट सी द साइज, राइट क्लिक करके आप प्रॉपर्टीज चेक करेंगे तो आपको साइज पता चल जाता है कि इसका साइज क्या है। तो इट वाज लाइक 3.4 KB, 3.5-4 KB तो चलता है, अप टू 20 KB इज अलाउड। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आज, ठीक है, बिकॉज साइज डज मैटर्स। इफ यू आर यूजिंग इट एज अ लोगो तो 20 KB के विद इन रखना। तो जस्ट क्रिएट वन एप्लीकेशन फॉर नाउ, एवरी वन ऑफ यू मार्क इनकॉर्पोरेशन ही बना लो, कोई दिक्कत नहीं। इसका आपको, आप मार्क टाइप करेंगे, गूगल करेंगे तो यू विल गोइंग टू गेट द इमेज, आपको मिल जाएगा। इफ यू सर्च फॉर द मार्क इनकॉर्पोरेशन, उसका इमेज अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। देयर आर सो मेनी इमेजेस फॉर दैट, आप इनमें से कोई भी एक उठा लो, उसका साइज देख लो, 20 KB के विद इन में रहना चाहिए, बस हो गया। प्लीज में नहीं आते मुझसे, ये इमेज है जो मैंने कहा था, आप उठा सकते हो उसको। ये है हमारा क्लाइंट, कनेडियन क्लाइंट है ये, इसके लिए काम करता हूँ, ठीक है। चलो, सो डू विद दिस इज द टुडेज असाइनमेंट। कल फिर मैं एक दूसरा एप्लीकेशन लेता हूँ एंड वी विल एक्चुअली स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, उस पे काम करेंगे। दिस इज फॉर जस्ट टू हैव अ ग्राउंड प्रैक्टिस लाइक दिस।